October की window के लिए we have a nation locked up who's a higher ranked team again. Okay. They really want to play against us. I believe in that. I know how to coach because I've coached not only in Pakistan, I've coached across the world. लैला बनारस की रील जो है वो कितनी वायरल हुई है. You guys saw what she did. So she's a great football player. Kayla was because of personal reasons that she couldn't come. But in my opinion, she should have come, and she could have if she wanted to. Truly. लेकिन हमारे जो फैंस हैं वो सबसे पहला जो सवाल पूछते हैं हमारा टीम वर्ल्ड कप कैसे क्वालिफाई करेगी. I think next 20 years you can forget about it. Whether it's through being the national coach or whether it's through TD position or being a Congress member, I'll be okay with either of them. So it doesn't matter to me. So just my idea is to always help. मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम के हेड कोच अदील रिज़की. अदील कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू. बिल्कुल ठीक ठाक जी. अदील, अभी आपकी टीम ने AFC एशियन कप क्वालिफायर्स में खेला, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. लेकिन बिफोर आई गेट इनटू दैट, मैं पहले मैच पे आना चाहूँगा जो पे हमारी चाइनीज़ टाइपे से पाकिस्तान की टीम बहुत बुरी तरह 8-0 से आ रही. तो उस मैच में क्या हुआ था, व्हाट वेंट रॉन्ग, और फिर हाउ डिड यू डील विद इट कि टीम का मोरल ऑब्वियसली डाउन होगा, तो फिर उसके बाद बाउंस बैक करना इन रिमेनिंग मैचेस टू विन दोज अगेंस्ट हायर रैंक टीम्स. तो हाउ वाज दैट लाइक? I think the first game was a result of lack of preparation. जो हमने कोशिश करी थी, जो मैंने plan submit किया था of how I wanted to prepare for the tournament. I think we took it lightly. We didn't give it enough importance. So जो मेरा plan था कि we would prepare for 2 months in advance. हमारी जो May वाली window थी वो खेलेंगे. Then we'll keep the players with us in a longer camp. So because of funding, because of other reasons as well, we weren't able to do that. And then we ended up getting a 5 to 6 day camp, जो कि बहुत कम टाइम होता है for inexperienced squad जो 7 महीने 8 महीने से खेली नहीं है, and then new players coming in as well. तो हमने जो कुछ कर सकते थे 5-6 दिन में हमने कोशिश करी है उसको, but end of the day you need match practice, और match practice हमारी नहीं थी. हमने खेले 1-2 games but with local teams जो it's not the same intensity. तो हमारी intensity level during that game wasn't as good as it was supposed to be. The game plan was very simple. We wanted to go and try to win that game or try to keep it to a draw. But ये नहीं था कि हम बैठ के बस सिर्फ हम लोग pressure लेंगे. That wasn't the plan. But again, it was a new thing. Players were, a little nervous. I think nerves were very high at that time. So because of Chinese Taipei is a very strong team. They've been playing regular football for the last few years. Former Asian champions, and the last game that they played before playing against us was against Philippines, which is a World Cup playing team. उनको हरा कर आए थे वो लोग. So they were in full flow and full confidence के साथ वो लोग आए थे. And on the opposite, we were on the complete opposite end of the spectrum, where we hadn't played any football for the last 8 months. And अगर आप डायस्पोरा प्लेयर्स की बात करें, हमारे लोकल प्लेयर्स की बात करें, उन्होंने भी मई से नहीं खेला हुआ था, बिकॉज मई में लीग्स एंड हो जाती हैं. सो वी हैड टू ब्रिंग एवरीथिंग बैक टुगेदर. सो दैट 6-7 days वी डिड वर्क वेरी हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड. सारे प्लेयर्स ने बहुत मेहनत करी है, फुल टाइम डाला, अपना फोकस था. बट because of that, we weren't able to perform. We weren't able to match the intensity of that game. And आपने notice किया होगा कि 86 मिनट तक we were at 4-0. And 86 to the 90th minute में जो 4-5 मिनट का फासला था, उसमें हमें 4 गोल पड़े हैं because of the fact that our players उस वक्त burn out हो चुकी थी and the heads were down completely. After that match, it was pretty. We had almost hit rock bottom, and bringing. मैं आपकी बात कर रहा हूँ. ये जब इतनी बड़ी डिफीट के बाद, तो उस वक्त प्लेयर्स को बैकअप करने के लिए, उनका मोरल ऊपर करने के लिए, बट आप किस तरह डील करते हैं? बिकॉज़ आई एम श्योर वो बहुत डिफिकल्ट होता होगा. कैसे मोटिवेट करोगे प्लेयर को? आई थिंक हम लोग ने क्या किया उसको, उस वक्त हमने काफ़ी चीज़ें वी लेफ्ट इट एज इट. हमने बेसिक एक कॉन्वर्सेशन हुई हमारी चेंजिंग रूम के अंदर, एंड देन वी वेंट बैक टू आवर होटल एंड वी जस्ट काइंड ऑफ सैट देयर एंड जस्ट took everybody went their own way. हमने उस वक्त कुछ बोला नहीं, because if we would have done it, it could have gone very differently. Then us, हमारा coaching staff, हमारी management teams और हमारा जो captains and जो हमारे leaders of the team है, उनको हमने gather करके उनसे हमारी meetings हुई हैं to get feedback of what went wrong, what didn't go wrong. तो हम सारी चीज़ों पे work करा हमने, and then we devised a plan to how we were going to move forward. We had 2 days to go into the next game. So we had to do everything very fast.
बट द फर्स्ट डे वी जस्ट काइंड ऑफ लेफ्ट एवरीबडी टू देयर ओन सेल्फ, बिकॉज अगर हम लोग करते ना तो वो ब्लेम गेम स्टार्ट होता है कि आपकी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से. तो वो चीज़ हम अवॉइड करने के लिए वी डिड नॉट कन्फ्रंट एनीबडी एट दैट टाइम. आई डिड नॉट ब्लेम एनीबडी फॉर द लॉस. It was a collective failure. I can take the blame for it, no problem. You know, I could have had the game plan wrong, but as such game plan में कोई changes नहीं थे from game 1 to 2 to 3. There was no main changes. It was simply the nerves and intensity that we could not match at that time, and that happens to a team which is not regularly playing football. So we had to explain the situation to them, and then when we came back, we had a lot of conversations, one-on-one meetings with the players, with the teams, with the staff, कि हम किस तरह उसको overcome कर सकते हैं. So we took one day at a time, we took one practice session at a time. तो हमारे पास 2 practice sessions थी, हमने उसमें work किया, हमने individually काम किया लोगों के ऊपर, and then we arrived to Indonesia. Indonesia के game जब हुआ तो उसमें there was a full packed stadium. So again, but my only message to them was if you guys stay in the game and you match their intensity, you'll be fine. Because they know how to play football. It's not like हमारी टीम को football नहीं खेलना आता. So when they did that, I think they felt like I told them कि हर मिनट अलग अलग लेके जाएं आप, 5-5 मिनट का खेलें आप. Don't think about कि 90th मिनट में क्या होने वाला है. अभी का सोचें what's going to happen in this moment. So if you win your small battles individually, you'll be fine. And mashallah they performed, and you know, credit goes to the players who delivered on the field. Everybody kept it very tight and very clean. They delivered from the players who came off the bench as well. Everybody made players की आपने बात की, इस दफ़ा डायस्पोरा प्लेयर्स की ज़्यादा इंक्लूजन थी स्क्वाड में, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया. लैला बनारस हो, मरियम हो, चाहे वो गोलकीपर जियाना हो. तो हाउ डू यू असेस देयर परफॉर्मेंस? उनकी इंक्लूजन से ज़्यादा फर्क पड़ा टीम को? Absolutely. I think Ziana was the first one that we feel that who made a big impact to our team, because of course एक गोलकीपर आपका एक सॉलिड होता है तो उससे आपकी काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट आ जाता है. From playing out from the back, आप बात करें अटैक स्टार्ट करने के लिए या डिफेंस को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, तो शी वाज एब्सोल्युटली वेरी क्रिटिकल. शी इज वेरी गुड टू आवर सेटअप, very positive throughout, communication skills amazing. So all of these things add up, right? तो वो चीज़ Ziana was excellent. आपने तो शायद आपने भी देखी, मुझसे ज़्यादा देखी होंगी जो लैला बनारस की रील्स जो वो कितनी वायरल हुई हैं. You guys saw what she did. So you know, she's a great football player with a good mind. तो उनको मिडफील्ड में खिलाने का मकसद यही था कि वी कैन टेक कंट्रोल ऑफ द मिडल. जब आपका इंजन अच्छा होता है तो यू कैन प्ले फुटबॉल. सो दैट्स व्हाट द आइडिया वाज. And then coupled with Mariam on top, जो कि throughout the camp injured रही हैं, उनको game time भी थोड़ा सा कम मिला है. But when she did get the game time, she was very effective coming on and scoring penalties and goals and trying to create something. That's important. But I'm not going to take away anything from the players who played otherwise, like the likes of, you know, Maria हो गई, Anmol हो गई, Soha हो गए, Ramin. These guys all made as much of an effort and did the team के लिए support was the entire team. It wasn't only these 3 players. Of course, they were the ones who made the difference, but it's a collective effort. Obviously it is. अच्छा, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा. ये जो आपने डिफेंस की अभी बात की, थोड़ा सा पहले मैच में हमें लगा मेकशिफ्ट डिफेंस थी. इसरा भी पीछे खेल रही थी, सोहा को भी आपने पीछे खिलाया डिफेंस में. सो वो उसके पीछे क्या रीज़न था? लाइक इट वाज कोई रिसोर्सेज क्या ज़्यादा मसला था? आई थिंक हमारे पास नहीं है डिफेंडर्स, जो क्लियर बात है. वी हैड अच्छा, डिफेंडर्स नहीं है. मुझे वो भी बता दें, केला सिद्दीकी क्यों नहीं इस दफ़ा आई थी? अच्छा, केला सिद्दीकी का ये था कि केला वाज इट वाज बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस दैट शी कुडंट कम. बट इन माय ओपिनियन शी शुड हैव कम एंड शी कुड हैव इफ शी वांटेड टू ट्रूली. So I think that's something, you know, it would have had a major impact on how we क्योंकि उन्होंने पिछले मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस जी, बिल्कुल. आपने इंडिया के खिलाफ या बांग्लादेश के खिलाफ she was very critical to our team. And she's sort of a leader at the back. She is leader. She's very strong and bold, and so we can have that body at the back, which is really good. तो वो नहीं था हमारे पास option. तो because of that, and coupled with Sara Khan, who usually plays right back as well, she was उनकी family में कोई issue चल रहा था, वो भी available नहीं थी. So we had to do a makeshift arrangement across the board. So whether it's right back, center backs की बात करें, left back की बात करें, तो all of them were a makeshift setup at that time. On all 3 games, not only the first game, all 3 games. Yeah. मुझे लगता है sometimes आपके जो है काफ़ी unnecessary criticism भी होता है आपकी कोचिंग के ऊपर, कोचिंग स्टाइल के ऊपर, और like the players you picked. So like, is it like difficult to deal with, or like how do you deal with it? मतलब criticism तो हर किसी के साथ ही होता है, that's like part of the game. लेकिन हमारे जो सिस्टम में और जो जिस तरह का क्रिटिसिज्म आता है ना, वो लोकल प्लेयर्स को परफॉर्मेंस चांस नहीं मिल रहा और बाहर से लोग आके खेल रहे हैं. लाइक वो मेंटालिटी के साथ डील करना और टू चेंज दैट मेंटालिटी, कि उन लोगों को समझाना, एंड एट द सेम टाइम लाइक कोचिंग द टीम.
तो वो कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए डील करना? I think if I focus too much on it, it will become very difficult. The good part is I can very easily block that off when I'm in camp. तो मैं नहीं, मेरा intentions are very pure. I believe in myself. I believe in that I know how to coach because I've coached not only in Pakistan, I've coached across the world. I have my licenses from Europe, so there's a big difference between myself and other coaches in Pakistan. So I see that I don't see that as competition or criticism. I see that as people trying to just pull me down for no reason, because anybody who's at that stage will get criticism, which is fair, but उनको time देना होता है, but also the results matter. तो अगर आप देख लें performances from all the other teams versus our women's team, our performances have been quite decent. I've always said that we want to play an entertaining brand of football. हमें attacking style खेलना है. So it doesn't matter if we lose 8-2 or 8-3 or whatever, but the idea is always to get out there and try to win the match, not just sit back and defend. And eventually जब हमारी teams बेहतर होती रहेंगी तो inshallah you will see that as well. But until then we can't shy away from doing what we really want to do. अच्छा, अभी अक्टूबर नवंबर में भी फीफा की विंडोज़ भी आ रही है. अब हमारा मसला ये होता है कि हम एक टूर्नामेंट खेलते हैं, फिर जैसे अभी लास्ट टाइम भी होता 7 महीने कोई मैच नहीं था, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा कोई फ्रेंडलीज का कोई प्लान है, कोई आपने पिच देखिए किया है या हमारे we have friendlies lined up, but it all depends on the current situation of the federation. फाइनेंसेस का भी मसला चल रहा Finances का issue चल रहा है, तो all of those things are a part of that, but we have teams locked up जो कि हमें invite करती हैं because we can't host them here. And I'm sure कि जब हमने अभी 2 अच्छी हायर रैंक टीम्स को हराया तो हमें अब और टीम्स लाइक जी बिल्कुल ऐसे all the higher ranked teams want to play against us and they want us to be part of their programs and compete with us and we want to do the same. तो ये the resources का मसला है, बाकी तो everything is in line. It's easy to ask teams to play against us. So October की window के लिए we have a nation locked up who's a higher ranked team again. Okay. They really want to play against us. But again, it's a matter of if we are able to do it or not because of the finances. क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें. वैसे अब तो हमारी वुमेन्स टीम जो है वो सबसे अच्छा ही खेल रही है, बाकी एज कम्पेयर टू ऑल अदर नेशनल टीम्स हमारी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए इनको भी. वैसे बिल्कुल ऐसे ही है. आई थिंक प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, बट ऑल्सो आई थिंक एवरीथिंग शुड गो साइमल्टेनियसली. आई डोंट बिलीव कि एक टीम पे फोकस होना चाहिए. आई थिंक सब पे फोकस होना चाहिए बिकॉज हमारा काम ही है फुटबॉल में. सो आई थिंक इंशाल्लाह और अभी U17 खेलेगी, हमारी U23 खेलेगी, एंड आई नो आई एम प्रीटी श्योर दे आर गोना डू वेल एज वेल. So I'm not taking away anything from anybody, but yes, the women team has performed because of the fact that they work extremely hard. तो उनको credit देना चाहिए and उनको support करना चाहिए maximum पे, because जैसे हमने discuss किया कि हमारी जो women's में हमारी women's team जो अभी उसकी ranking जल्दी बढ़ सकती है, so it's easier to help that. तो as compared to the men's team. तो क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है. अभी आप देखें इंडिया एंड बांग्लादेश both have qualified for the AFC Cup in U20 and in the women's teams. तो and हमारी तो U20 की टीम भी नहीं है. So we need to focus a little bit on it, and I think the new federation जो है अभी in place, I think they have a good plan for it, and inshallah if that goes through, तो we will be there. अच्छा, लीग का एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में. लीग होती नहीं है, और जो वुमेन्स चैंपियनशिप होती है, मुझे आपका ओपिनियन उसके ऊपर नहीं पता, लेकिन वो जो भी होती है वो चंद हफ्तों की चैंपियनशिप जिसमें लॉपसाइडेड टीम्स होती हैं और कोई मिसमैच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वो लाइक उसका कोई इम्पैक्ट है, उसका कोई फ़ायदा भी है लाइक, या आप वो चाहेंगे कि लाइक प्रॉपर कोई कुछ महीनों पे चलने वाली तो एटलीस्ट लीग हो जो जिस तरह दुनिया भर में होता है? जी, आई थिंक लीग्स इज द बैकबोन ऑफ एनी फेडरेशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन, एज इन एनी कंट्री. फुटबॉल प्लेयर्स की जो भी है, तो वेदर आप कोई भी टीम ले लें जहाँ अच्छी खेल रही है, उधर आपकी लीग होगी जो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. हमारा नेशनल चैम्पियनशिप जो होती है इट्स वेरी बेसिक. 10 दिन के अंदर 6-7 मैचेस होते हैं. प्लेयर्स को रिकवरी टाइम 0 होता है. इट्स ऑफ कोर्स गोइंग टू बी लॉपसाइडेड बिकॉज जो प्लेयर थोड़ा सा बेहतर होगा वो हमेशा जीतेगा. सो नो, इट्स नॉट अ गुड कॉम्पिटिशन टू प्ले. आई थिंक हमें एटलीस्ट 7 to 8 months की लीग होनी चाहिए जिसके अंदर हमारी टीम्स आएँ, होम एंड अवे खेलें, डिफरेंट दे ट्रैवल फॉर इट. सो ऑल दीज थिंग्स मैटर, एंड दैट्स व्हेन यू गेट बेटर. आपके पास क्लब लाइसेंसिंग प्रोग्राम्स हों, आपके पास टीम्स हों जो कि एक्चुअली ट्रेन कर रही हों थ्रू आउट द ईयर, नॉट के सिर्फ नेशनल चैम्पियनशिप के वक्त दे स्टार्ट ट्रेनिंग 2-4 दिन पहले और खड़े होकर टीम खिला दें. तो दैट्स नॉट हाउ फुटबॉल इज़ गोना डेवलप इन आवर कंट्री. तो उसको हमें उससे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. एंड अगेन, नॉट ओनली फॉर द वुमेन्स, फॉर द मेंस, फॉर द यूथ टीम्स, वी नीड टू हैव लीग्स इन प्लेस, ताकि कॉम्पिटिशन अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्लेयर निकलेगा. बिल्कुल. अच्छा, मुझसे बहुत बेसिक सवाल है और मैं पूछ लेता हूँ हमेशा, जब भी जो भी आता है मुझे इसका जवाब मोरलेस पता ही है जो आप जो भी देंगे,
लेकिन हमारे जो फैंस हैं वो सबसे पहला जो सवाल पूछते हैं हमारा टीम वर्ल्ड कप कैसे क्वालिफाई करेगी. Yeah. I think it's a long shot, to be honest. I think हमारे पास जापान की तरह हमारे पास कुछ 50 से 100 साल का प्लान होना चाहिए. It's not going to be today. Okay? And I think next 20 years you can forget about it. I think it has to be a long-term vision, and it has to start slowly and steady. तो again grassroots से start करना पड़ेगा. पहले आप एशिया पे आप dominate करें, उसके बाद आप थोड़ा सा आगे का सोच सकते हैं. पहले तो आई वुड से सैफ में डोमिनेशन होनी चाहिए हमारी, कि आप सैफ चैम्पियनशिप्स जीत रहे हैं रेगुलरली. देन यू गो इनटू प्लेइंग एशियन कप्स. तो हमारी अंडर 23 टीम्स, अंडर 20 वुमेन्स मेंस खेल रही हों, एंड दे विल बी क्वालिफाइंग फॉर द एशियन कप. मेरे ख्याल से नेक्स्ट टारगेट तो हमारा साफ ही होना चाहिए ना. Absolutely. The first target has to be SAF. How do we win SAF should be our question in the next 5 years. And then the next 10 years, 15 years should be how do we win the AFC Cup. And then you can think about the rest. Otherwise, I think living in a fool's paradise. Exactly. अच्छा, आपका जो कोचिंग स्टाफ है, are you like satisfied with the people you have around? Like आपको लगता है कि उसमें कुछ और inclusions होनी चाहिए? Because like दुनिया भर की टीम्स they have like massive coaching staffs. Right. और हमारे में तो like 3-4 लोगों पे कहानी मुक जाती है. हाँ, और कुछ ऐसा था कि we weren't allowed to do it because of the financial burden जो आता है उसकी वजह से. So I think the 2-3 members that I have on my coaching staff, I'm very very happy with them. I think they understand what the requirement is. Especially Ahsan हो गया जो हमारे goalkeeping coach हैं. Whether it's Mahmood was our fitness, strength and conditioning coach. Both of them add supreme value to our team. They understand the local players. They understand उनकी diet क्या है, उनकी training schedules क्या हैं. So they're not coming from a different environment where they like don't know anything about it and they want to replicate something which is not there. तो उनको पता है players के बारे में. So we try to understand the players. So I'm very happy in that sense. I think medical wise we can be better, we can managers wise we can be better as well. तो वो चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं बाद में भी. But players need that a lot more. वैसे आपकी because even our physiotherapist is very good, they all very good, but there's always room for improvements and always room to become better and better. तो वो हम we can get people from outside, but I want to develop people over here as well. तो locally हमारा staff होना जो है वो अच्छा staff है. It's not a bad staff, it's very good staff, but I keep pushing them to become better and better ताकि वो learn करें, educate करें अपने आप को और किस तरह बेहतर हो सकते हैं. How is that locally हमें courses वगैरह भी, वो तो PFF की elected body भी आ गई है, तो like courses वगैरह भी कराना चाहिए, certification तो ज़रूरी है सारा. जी. अच्छा, मैं थोड़ा सा लोकल फुटबॉल पे आना चाहूँगा. आप कराची सिटी फुटबॉल क्लब के भी को-फाउंडर हैं. जी. जो कराची में लाइक वेल नोन, जो भी आप लोगों ने अच्छा काम किया है. तो वो प्रोजेक्ट आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है? आप लोगों ने इस्लामाबाद में भी जो है उसका एक वर्जन लॉन्च किया है. तो वो हाउ डू यू सी दैट, लाइक उसका इम्पैक्ट और उसका क्या प्लान क्या आगे, उसको वेयर डू यू वांट टू सी इट इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? The plan was basically that we want to develop good football players, to give them a proper environment where they can learn how to play football and develop the love for the sport. I think हमारा जो अभी प्रोग्राम है, it's very grassroots पे काम करते हैं, जिस पे हम लोग it's open to anybody and everybody who wants to join. So there's no selection criteria. उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को stop करते हैं उसमें आने से. And same will happen in in Islamabad, and our idea is to open Lahore as well. So all 3 locations, which are the major cities of your country, should have these places where anyone can join football and develop the love for the sport. Future में हम लोग करना क्या चाह रहे हैं? We want to get a little bit more tighter, where we start selecting players to play for our teams, whether it's youth teams or the senior teams. और उसके अंदर हम लोग उनको एक elite program या high performance program के तौर पे हम उसको चलाएंगे, where we want to replicate things that happen elsewhere in the world, and how we can give that environment and culture to our players to be successful and move forward, and give them a pathway to go to our national teams to be successful as well. अच्छा, आपने ओवरसीज भी क्लब्स के साथ भी काम किया हुआ है. अभी आप रिसेंटली मेरे ख्याल से टोरंटो यूनाइटेड के लिए एज टेक्निकल डायरेक्टर काम कर रहे थे. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, और लाइक आपका आगे जाके प्लान है टू लाइक move abroad and like coach foreign clubs? Again, that's where my exposure comes from. I think I've coached everywhere in the world, whether it's coaching license की बात करें तो my coaching license from Germany, Scotland, everywhere, America से भी है. So I've done that. I've coached with FC Barcelona in Toronto and other places as well. I've gone to Spain many times to coach players. So I have that experience. Toronto United was a great experience for me as well, where I got to do, to coach other coaches, to educate them, to educate the players and the other staff as well. So that was a massive, exposure for me as well.
I want to help Pakistan football. I want to be here. I want to be able to impart my knowledge on the football over here. And I think there's a lot of room for that. There are not many people who can do that. I think there are a few people who are working very hard in football, and I believe that I strive to be one of them, and want to see Pakistan football actually develop. I don't have any political connection or, ye iska banda hai, uska banda hai. That's not my job. My job is to focus on the football, try to get it better, and inshallah see our teams succeed. And that's my main objective. And if we can achieve that, I think the job is done. So my purpose is football and to help football in Pakistan. That's what I believe. अच्छा, बिफोर आई रैप दिस अप, मेरे सोशल मीडिया पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो जी, आपके लिए आए हैं, sure. सो वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ. अच्छा, एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है कि आप टेक्निकल डायरेक्टर बनना चाहते हैं पीएफएफ में. बनना चाहते हैं वो अलग बात है, बट आई थिंक आपने अप्लाई भी किया पोजीशन के लिए? जी, I applied. I mean, there's no nothing to hide about. I've applied for the position. The reason why I think that I'm a decent candidate is because of the fact that I have international exposure. I have local exposure. I can speak the language. I have the knowledge base जो चाहिए हमें यहाँ पे. I understand how football works in men's, women's, youth over here. So, and the ideas are there. So we want to build nice grassroots programs. We want to have coach education. We want to make sure our national teams are doing well. So the whole 360-degree approach, I'm pretty clear on what that needs to happen. So of course, my idea would be to try to apply for that position and try to become, have a bigger impact on football in Pakistan, and do it the right way, hopefully. So that's the objective. So there's nothing to hide over there. I've applied for the position. Let's see what happens. I don't know what's going to happen. अच्छा, आप कांग्रेस मेंबर भी हैं, आप मल्टीपल क्लब्स को ओन भी कर रहे हैं, तो वो इफ यू बिकम टेक्निकल डायरेक्टर, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा? उसको मैनेज किस तरह होगा वो? Right. So yeah, I think people don't understand that Congress member. How did I become a Congress member is the question. Karachi right? city की वो Yeah, through football. Yeah. So to be honest, I'm the only Congress member there who's there because of football. Okay, that's the truth of the matter, right? Okay. I'm only there because we won in our the championship. Yeah. And that for me is not important. Important for me is to how I can help football in Pakistan. So जो मैं क्लब्स की बात करी वो भी हमारे पास तकरीबन we have about 60 coaches, 70 coaches across Karachi and Islamabad who are coaching. So I'm trying to do good for football, whether the coaches, whether it's players. We have about 1,000 players in Karachi. Abhi Islamabad has just started, so we have about 70, 80 kids there already, and we'll go to other locations as well. So वो सब चीज़ें grow कर रही हैं, and it's for the benefit of the country. If there's a conflict of interest in this, I'm happy to kind of address that at that stage. If I were to be chosen or whatever, I'm happy to shy away. I'm not going to shy away from saying that I don't necessarily want to be a Congress member. That's not my objective. My objective is to help Pakistan in Pakistan football. How can I do that the best possible way? Whether it's through private things, whether it's through being the national coach, or whether it's through TD position or being a Congress member, I'll be okay with either of them. So it doesn't matter to me. So just my idea is to always help. Okay. अच्छा, एक और क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आता है कि और कौन से डायस्पोरा प्लेयर्स हम लोग साइन करेंगे? There are quite a few actually जो हम लोग जिनको अभी स्काउट कर रहे हैं. But एक दो के नाम बता सकते हैं? Yeah, I can. I don't want to put you on the spot. No, and I think that there's a few players, but unki until unless they don't have that, they don't sign for us. I think it's unfair on giving you names. Okay. But I think the idea was what I'm trying to explain is to get better and better diaspora players. Can't be कि जिसको any Pakistani living abroad who plays a little bit of football can come in. It has to be that you're a top player, and you need to be able to should be able to play in the starting 11. So we want those kind of players, and I will always keep a balance between diaspora players and local players. So my effort towards helping local football is always going to be there, whether it's for players, clubs, whatever it is. I'll be happy to do that. जब फाइनली वो वुमेन्स का जो होम गेम है वो आज तक अभी हमारी टीम ने खेला नहीं है, तो उसका कोई प्लान है इन द फ्यूचर? देखिए हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास we don't have the resources to host a game right now, because एक ही Jinnah Stadium is the only place we can do it, and I think that's under construction a little bit right now. I would love to have a home game. I think the idea would be to let our Pakistani fans see these players playing live. If you see them live, it's a very different ball game, and you'll enjoy it a lot more. I think
I would love to strive for that. My objective would be to जितने ज़्यादा home games कर सकें हम लोग करें. But inshallah, I would push for next year we should have at least one home game for our female team, and of course men's team तो खेलेंगी inshallah. But we need to have the proper infrastructure for that. Once we have the infrastructure, there should be no one holding us back to do this. I think we need to get out there and make sure our fans are coming and watching us play. Thank you so much, Adeel bhai. No problem. Good luck for the future. Thank you so अच्छी much. track पे है. Hopefully that will continue Thank you. in the future as well. Thank you for Thank inviting you once me. again. Thank you.